हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी की जो टॉपिक रहेगी वो होगी जियोमॉर्फोलॉजी। तो चलिए हम जियोमॉर्फोलॉजी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो व्हेन अर्थ ओरिजिनेटेड ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जब अर्थ ओरिजिनेट हुआ था बिग बैंग थ्योरी के थ्रू, तो उस टाइम पे अर्थ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती थी। अर्थ जो था वो एक रोटेटिंग बॉल ऑफ फायर था। उसके बाद ड्यू टू रोटेशन अर्थ स्टार्टेड कूलिंग। और हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ कूल होता है तो डेंसिटी के डिफरेंस के कारण जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पहले ठंडा हो जाता है और वो सिंक कर जाता है, सिंक डाउन। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो आयरन और निकल थे वो सेटल डाउन हो गए इन द बेस, और उसे हम बोलते हैं निफे लेयर। मतलब निफे लेयर और कोर। और जो मैग्नीशियम, सिलिका और जो थोड़े आयन बचे थे उसे हम सीमा बोलते हैं, दैट इज़ मेंटल। तो जो कोर थी हमारी कोर, इसे हम बोलेंगे निफे। और जो हमारी मेंटल है इसे हम बोलेंगे सीमा। तो ओशियनिक क्रस्ट डेंसर होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सीमा। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो कंपैरेटिवली ओशियनिक क्रस्ट के लाइटर होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सियाल। तो जब अर्थ फॉर्म हुआ था तो उस टाइम पे इट डिड नॉट हैड ऑक्सीजन लेवल, इट ओनली हैड हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड टू सम एक्सटेंट नाइट्रोजन। और जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ, सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर बॉडी एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ वी विल स्टडी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये प्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू इयॉन्स, एरा, पीरियड्स एंड इपॉक। तो जो इयॉन होती है, इयॉन, इट इज़ द लार्जेस्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इयॉन फर्दर डिवाइड होती है इरा में। इरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स एंड पीरियड्स इनटू एपॉक। और जो हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है वो स्टार्ट फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, that is approximately 600 million years from today. 600 million years from today. फाइन। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। So let me draw it for you so that you can understand it easily. तो era will be first, Cenozoic era, then Mesozoic era,
Mesozoic, then Paleozoic, Paleozoic, and lastly Precambrian. Precambrian era. तो सेनोजोइक के जो पीरियड्स होंगे दैट विल बी एंथ्रोपोसीन, then quaternary and tertiary. Then comes Mesozoic. First Cenozoic, then Mesozoic, then Paleozoic and Precambrian. In Mesozoic, the periods includes Cretaceous period, Jurassic period and then Triassic period. ठीक है? Triassic. Then in Paleozoic, Permian, Carboniferous, Devonian, Ordovician and Cambrian. We call it as age of fishes. Age of fishes. Fine. And in Precambrian period, there is formation of Aravallis, oceans, origin of life in the form of anaerobic respiration. So, era is divided. Era consists of Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic and Precambrian. Fine. And the periods, Cenozoic period includes Anthropocene, Quaternary, Tertiary. Mesozoic period includes Cretaceous, Jurassic, Triassic. Paleozoic period includes Permian, Carboniferous, Devonian, Ordovician and Cambrian. So we can estimate that origin of Earth was around 4.5 billion years ago. When the Earth was formed, it was rich in hydrogen, helium, carbon dioxide, nitrogen, but oxygen was absent. So, we will talk about it one by one. So, we will start from Precambrian era. In Precambrian era, there were different major events which took place. First, there was formation of ocean, formation of oceans, then formation of Aravallis, and Aravallis we can say it is the old fold mountains in the world which belongs to this era. Aravalli की formation Precambrian era में हुई थी, and third major event was origin of life. Origin of life. Origin of life in the form of anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Around 2500 million years ago, blue-green algae originated and the process of photosynthesis started. Blue-green algae originated and photosynthesis started. Fine. So, in Precambrian era, what were the major events? First, there was formation of ocean, formation of Aravallis, and then origin of life in the form of anaerobic respiration. Blue-green algae originated and photosynthesis started. We will talk about Paleozoic. ठीक है? Paleozoic. तो Paleozoic में Paleozoic era is divided into
पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। ठीक है, फाइन। सो विल स्टार्ट फ्रॉम कैम्ब्रियन. Cambrian period, there was no presence of life on the continent, but this was the period of marine invertebrate. No presence of life and period of marine invertebrate. Fine. Ordovician. Ordovician was era of first fish. मतलब first fish originated in this period. Era of first fish. Fine. Then comes Devonian. Devonian. It is known as an age of fishes because maximum number of fishes came in this period. In Indian mythology, this period belongs to the Matsya avatar of Vishnu. Here, maximum number of fishes came. It is known as Devonian period is known as age of fishes because maximum number of fish originated. Then Carboniferous period. In this period, large number of vegetation went below earth. The living sediments were trapped to give rise to coal, and most of the coal in the world belongs to Carboniferous period. ठीक है, बट जो हमारी इंडियन कोल होती है, इंडियन कोल इज रिलेटिवली यंगर. इंडियन कोल डज नॉट बिलोंग्स टू कार्बोनिफेरस पीरियड. प्लीज नोट दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Indian coal does not belong to Carboniferous period. Rather, Indian coal is relatively younger in age and it belongs to Gondwana period, which is Gondwana period is in the later part of Carboniferous period. Fine. Next comes Mesozoic period, and after Mesozoic, Cenozoic period. So, Mesozoic era consists of Cretaceous, Jurassic and Triassic. New. So, in Cretaceous period, extinction of dinosaur. There was extinction of dinosaur. Q, because there was large scale of volcanic activities, and due to volcanic activities, dinosaur got extinct. और वॉल्केनिक एक्टिविटी क्यों हो रही थी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एट दैट टाइम अर्थ वॉज कूलिंग, एंड ड्यू टू कूलिंग ऑफ अर्थ volcanic activities occurred. And second reason for extinction was meteors collision on earth. So during Cretaceous period, due to large scale volcanic activities, there was formation of volcanic plateaus over the earth, and these plateaus were made up of basalt. Example, Deccan Plateau, Siberian Plateau, Siberian Plateau is in Russia, Columbia Snake Plateau which is in USA. So, original Deccan lava plateau was up to Haryana, but now it has reduced in size and today it is mostly in the Maharashtra region, and Maharashtra consists of black soil, and black soil is rich in black soil cotton producing region of the India. black soil में cotton की production अच्छे से होती है. One more extra information I'll give you here, meteor lakes. जो मैंने आपको अभी बताया कि जब earth was cooling, then meteors, due to meteor collision, lakes form due to the impact of meteors. Fine. So some of the meteor lakes at present on earth is Lunar Lake,
जो कि महाराष्ट्र में है। फाइन। was age of dinosaur and Cretaceous age, extinction of dinosaur. Fine. Cenozoic era is again divided into quaternary and tertiary. This is the oldest and comes quaternary. बहुत कोई here मानते हैं कि एंथ्रोपोसीन पीरियड भी है। तो टर्शियरी में जो था फॉर्मेशन ऑफ यांगफुल माउंटेन्स, here in tertiary formation of Yangtze mountains, formation of Yangtze mountains such as Himalayas. There was formation of Yangtze mountains such as Himalayas belonging to the alpine orogeny. So now there is environmental refuges because of pollution, right? We have completed the geological time scale. Thank you. Have a nice day.